Hey guys, I'm back. It's Wednesday today and we are already in middle of the week. Yeah, it's just 2 more days for the weekend. So I hope you're having a fabulous day. Well guys, recently my sister gave me a bunch of kurtis. Well, I don't have a habit of wearing kurtis because मुझे थोड़ा comfortable नहीं लगता. But still now that she has already given me, I'm going to style them differently. Well, yes. So in today's video, I have just picked up like 5 kurtis of different colors. So I'm going to style them. So let's get started. So guys, the first kurti that I have here is this one. So actually it's like a shirt plus kurti because इसमें जो है I think it's a mandarin collar and it has this buttons here और ये जो इसका जो length है it's like almost like thigh तक आता है, so it's like a very short kurti. So this one I have decided to pair it up with a pair of skinny jeans. So जो material है it's very soft. I love the fabric. Yes, it's very flowy or it has some sort of designing over here. Let's see how it actually looks on me. So guys, the next kurta is this and it is like an absolute white in color and length है almost like calf area तक आता है, just above the ankle, and it has this like some sort of embroidery on it. इसके पूरे front area में यही design है. I'll just show you closely. So you can see it has like this thread work on it and इस पे थोड़ा multiple color का कुछ ऐसे it has a floral print. Fabric है बहुत flowy है but it's kind of thick also. तो like it's maybe like not very comfortable for summer season. So I have seen people wearing white with red. Yeah, red looks great, but then I have decided to pair it up with a pair of leggings which is like an absolute like a navy blue. These are like ankle length. So yeah, ankle, and it fits me perfectly. And when you're wearing a kurti without a dupatta, that look like feels very incomplete. So in order to compensate the look, I am not going to wear dupatta along with it, but then I am just going to put on one more jacket of the same color. यहाँ पे जो legging का color है, same color का, I have a cropped denim jacket here. So I will, instead of wearing a dupatta, I am going to wear this. So let's directly put it on and you can let me know whether you like it or not, or like if you were in my position, like what would you pair it up with. So guys, the next kurta is one of my favorite here, but it's very like bright yellow color का kurta and it's very light. मतलब अगर अब मैं इसको ऐसे करूँ ना तो ये almost ऐसे पकड़ में आ जाता है because it is so light. The fabric is so light. मतलब गर्मी के लिए मुझे लगता है एकदम perfect है. And ये जो color है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. This mustard yellow ना, it's very, कैमरे में एक्चुअल में थोड़ा मे बी डिफरेंट येलो दिख रहा होगा बट रियलिटी में आई एम जस्ट लविंग द कलर. और इसके ऊपर अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इट हैज सम सॉर्ट ऑफ लाइक गोल्डन में रबर प्रिंट है और इसके नेक लाइनिंग में भी इट हैज द सेम गोल्डन प्रिंट में डिजाइन हो रखा है. And it has some different patterns on the sleeve as well, but the print is same, which I think apparently will just go off after a wash or two. So but then I don't care about that. So I feel this is like one of my favorites, and I mean, yes, because it's so light. I mean, feels so light. So what I've decided, I'm going to pair it up with a pair of leggings, yellow in color, and I'm going to pair it up with pink color का legging here. This is the legging. It's very stretchable, fits me perfectly. And जो दुपट्टा होने वाला है, well, I'm going to use a दुपट्टा here. So this is a dual tone दुपट्टा. So it has some sort of print on it, if you can see here, and it is very see through, almost like net type का दुपट्टा है. ये दुपट्टा मेरे पास पहले से ही था. Like I have one पटियाला सूट, अगर आपको पटियाला सूट पता है तो उसका दुपट्टा है. वो सूट तो like I've just stopped wearing, but usually दुपट्टे पुराने नहीं होते and it's like almost like brand new दुपट्टा. I use this दुपट्टा. So I have decided to wear this pink with yellow and it has both the colors here. So मुझे लग रहा है ये बहुत perfectly जाएंगे इसके साथ. Without wasting any time, let's directly try it on and let's see कि actual में ये कैसा लग रहा है. So the next one is this. So the color is turquoise blue. Turquoise blue ही है. Turquoise blue होता है, turquoise green होता है, turquoise blue. वेल इस कलर को एक्चुअली टील भी बोलते हैं, या अगर आप हिंदी में बात करें तो मुझे लगता है ये पिस्ताशियो ग्रीन जो होता है ना वो कलर का है. दिस इज एक्चुअली बैक साइड, द फ्रंट इज दिस एंड इट हैज लाइक लॉट ऑफ प्रिंट ऑन इट, लाइक रैंडम फ्लोरल एंड पता नहीं कुछ कुछ, या इट हैज लाइक
फुल ऑन प्रिंट हो रखा है इसके ऊपर। द कुर्ती इज जस्ट बिलो द नी एंड जो इसका फैब्रिक है इट्स वेरी सॉफ्ट, वेल यू कैन नॉट फील बट आई नो आई कैन टच एंड फील। इफ यू हैव अ बलून इन योर हैंड, उसका जो टेक्सचर होता है ना उस टाइप का इसका फील है। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड आई थिंक इट्स जस्ट वेरी फ्लोई एज वेल। जो प्रीवियस येलो कुर्ता आपने देखा दैट वाज लाइक प्योर कॉटन में, सो कॉटन जो होता है बहुत स्टिफ फील होता है, बट ये ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स वेरी फ्लोई, तो जैसा भी आपको बॉडी शेप है ना एकदम वैसे स्टिक करेगा। सो इट्स दैट मटेरियल एक्चुअली क्या है, बिकॉज इट हैज दिस प्रिंट ऑन इट राइट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज के साथ पहना जाए, तो बट देन आई फाइनली डिसाइड दैट आई एम गोना वेयर इट विद दिस वन। आई विल शो यू, दिस इज द सलवार एंड इट इज लाइक ऑकर कलर का सलवार है एंड इसका जो नीचे का बॉटम एरिया इट हैज दिस फ्लोरल पैटर्न ऑन इट। तो ये मतलब सलवार का जो ये फ्लोरल प्रिंट है ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये इसका जो फ्रंट में प्रिंट है इसके साथ ये सही लगेगा। सो मुझे लगा कि इसके साथ जाना चाहिए। और ये एक्चुअली मेरे कोई दूसरा एक सूट है उसका सलवार है एंड अगेन आई हैवंट वोन द सूट मच, तो ये इसका सलवार जो एकदम ब्रांड न्यू रखा है एंड इसका ये दुपट्टा है। सो ये दुपट्टा एंड ये सलवार ये एक्चुअली एक ही सूट का है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज गोना बी a success, so it can also be a failure, but then it doesn't matter any which ways. So I'm gonna pair this with this kurti, so I'm not sure if it's gonna work out, but then let's just fingers crossed and let's try it on. सो नेक्स्ट कुर्ती इज दिस ग्रीन कलर एंड इट्स स्मॉल इन साइज, बट ये मुझे देखने से ही बहुत लूज लग रहा है एंड आई एम समहाउ नॉट लाइकिंग दिस कुर्ता बिकॉज ये बहुत ज्यादा, इसका जो मटेरियल इट्स नॉट इवन कॉटन एंड इट्स नॉट इवन लाइक सिंथेटिक, आई एम नॉट श्योर व्हाट मटेरियल इट्स मेड अप ऑफ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्टिफ है। आई मीन लाइक अगर इसको पहन लेंगे तो इट विल बी लाइक वेरी अकड़ा यू नो, लाइक यू अंडरस्टैंड, अकड़ा लाइक स्टिफ। सो ये जो मटेरियल है मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है और अगेन इसके ऊपर भी लाइक आई विल शो यू ये कुर्ता है। ओके, सो इट हैज दिस नेक लाइनिंग ओवर हियर और ये जो आपको दिख रहा है दिस डिजाइन हियर इट्स अगेन द रबर प्रिंट विच इज गोल्डन इन कलर। अगेन ये 2-3 वॉश के साथ चला जाएगा बट आई डोंट केयर। मुझे लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा लूज होगा, तो इसको पहनने से पहले आई हैव टू जस्ट कस्टमाइज इट टू माई साइज फर्स्ट, बट देन इवन इफ आई वर टू ट्राई इट ऑन आई हैव डिसाइड टू वेयर दिस विद दीज धोती। ये जो है इट्स अ रेडीमेड धोती, सो इसका ये डिजाइन है। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू विल एवर अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ इट। ये एक्चुअल में आपको यहाँ पे ऐसे पिन करना चाहिए। सो और ये यहाँ पे ऐसे टक होता है, ठीक है। तो ये फ्रंट में ऐसे ओपनिंग सा रहता है विच इज लाइक दिस, सो इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ धोती। एंड टू कंप्लीट द लुक आई एम गोना पुट ऑन दिस दुपट्टा हियर। So the dupatta it has this bandhej print on it. If you know what bandhej is इस टाइप का जो प्रिंट होता है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं, इट्स द बंधेज प्रिंट। और इस पे अगर आप देखेंगे तो इवन दिस हैज दिस गोल्डन प्रिंट ऑन इट विच आई थॉट वुड गो वेल विद दिस गोल्डन प्रिंट ऑफ द कुर्ती। जो बॉर्डर है दिस इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर एंड इट हैज दिस सॉर्ट ऑफ येलो डिजाइन ऑन इट which I thought would go well with this green kurti and yellow pants. So let's put it on and see कि कैसा लगता है। So guys, ये थे मेरे 5 different ways of styling a ready-made kurti. I hope you've enjoyed the video and do let me know which look you liked the most. And even if you didn't like the look, just let me know what you felt was missing or what could have been better. I will definitely take your suggestion into consideration. So just leave a suggestion in the comment box below. And don't forget to like the video and subscribe to my channel. Until then, bye-bye and I will see you in my next video.